This is Mrs. Kusum Junjunwala, and she has been completely bedridden with lumbar canal stenosis, with a severe lumbar spondylosis and serious bone deformities in the lower back. She's an obese patient, postmenopausal, and she was completely diagnosed, almost bedridden by the top orthopedic surgeons in Calcutta, India, and they had advised lumbar spine surgery for immediate correction of the lumbar canal stenosis, but it was very difficult because she's very obese, and the risk of relapses were very high. So some of the doctors definitely were not in favor of operating her. So finally she was on a very high dose of muscle relaxants and high dose of chemical painkiller drugs, and almost bedridden, and she was crying in pain, and she had a lot of other issues as well. But then interestingly, she got connected with me, and I treated her with a series of my special arthritis homeopathic arthritis protocol, and it's been about a year or so, and now Mrs. Kusum Junjunwala is able to almost lead a normal active life without the use of any chemical drugs, any chemical painkillers, or any kind of chemical muscle relaxants. She's totally on my pure natural homeopathic arthritis protocol. Today she will demonstrate how she can get up from her bed, and then she will just walk around, and then she comes back and will sit down on the bed, and this is just to document the response we have had in the last 1 year of the homeopathic treatment. So here we start. I will ask Mrs. Junjunwala to get up from the bed and start to show how she can get up and walk and come back and sit down on the bed without, and it's very specially interesting is that without any support from any nursing support or any kind of other second party support. Very interestingly, and then she can climb downstairs, she can climb upstairs. She's been now very busy with her son's marriage. It's been fixed very soon, so she has a lot of jobs and a lot of difficult tasks to be done, and she's managing all on her own. This is very interesting now. So I will just ask Mrs. Kusum Junjunwala to just demonstrate her improvement by just getting up from the bed and just showing us how she can manage on her own. Okay, Madam, you can just get up now. Yeah. Here she goes. She just got up on her own, and without any kind of support, she can now walk. She doesn't even uses a walker or a stick or any kind of a support. She's able to walk on her own, and you see, this is amazing. This is completely unbelievable. Of course, she has a little bit of limping, but then it's really amazing. I can't believe this. We have all the documents from the hospital, from all the tests, the CT scans, everything, and this is a live report, a live documentation that this is possible. We can help millions of people suffering today who are bedridden with arthritis, with serious kind of arthritis, and we can help them to recover back to a point where they can manage their own lives without the need to depend on other people. I will just ask one or two lines from Mrs. Kusum Junjunwala. You can
स्पीक इन हिंदी, नो प्रॉब्लम। एंड आप हिंदी में आप थोड़ा अपना नाम बताइए और आपका उम्र बताइए। कुसुम झुंझुनवाला, 48 है मेरी एज। आप यहाँ पे तक। हाँ, कुसुम झुंझुनवाला, मेरी एज है 48 इयर्स। या आपको बीमारी क्या थी? बीमारी यही थी, मेरी बॉडी में कमर से लेके पैर तक सुनापन आता था और पैरों में बहुत दर्द था। और कमर से मैं बैठ नहीं पाती थी एकदम, न बाथरूम जा सकती थी न नहा सकती थी। अभी मैं आपकी दवा से वेल हूँ, एकदम ठीक हूँ अभी दवा से। ओके। और अभी जैसे अभी कोई सपोर्ट जैसे किसी नहीं, की? हाँ, मैं घर में कोई सपोर्ट से नहीं चलती, बाहर कहीं जाती हूँ तो सपोर्ट लेना पड़ता है क्योंकि वो जगह मेरे लिए नहीं रहती है। राइट। तो मेरे को किसी सपोर्ट, किसी हैंड्स की दरकार होती है। ठीक है। और मैं कोई स्टिक यूज़ नहीं करती हूँ, कोई वॉकर नहीं यूज़ करती हूँ। ठीक है। और खाली मुझे मैट का हैंड पकड़ना पड़ता है। ठीक है। और पहले जैसे आप कितने दिन से एकदम जैसे बिस्तर पे लेटे हुए थे? 2 साल तक मैं बिस्तर पे 2 साल से। हाँ। 2 years she has been bedridden with this kind of serious arthritis। और 2 साल के बाद में पहली टाइम आप सीढ़ी उतर के? हाँ, सीढ़ी उतर के मैं नीचे गई। कितना सीढ़ी उतरे हैं? मैं उतरी हूँ 64 सीढ़ी। 64 staircases। She's taking a flight of 64 staircases। She goes down and gets up, you know, I mean this is amazing, this is really amazing। और आप जैसे अभी गाड़ी से अभी शॉपिंग या बाजार में है जाती हूँ, लेकिन पकड़ के जाती हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, राइट। बाहर में तो हाँ थोड़ा सा तो हेल्प डेफिनेटली लगेगा। और अभी ज्यादा मैं घूम नहीं पाती हूँ। राइट। एक शॉप में जाके बैठती हूँ, बस वहीं से जो शॉपिंग करती हूँ। राइट। उसके बाद गाड़ी में घर आ जाती हूँ। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एकदम आपकी जो ये बातें हैं ये सुन के बहुत सारे पेशेंट को बहुत होप मिलेगा, बहुत आशा मिलेगी कि ऐसा बीमारी में भी हम लोग आज कुछ होम्योपैथी से कुछ कर सकते हैं। इसमें ऐसे निराश होने की कोई बात नहीं है। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतने अच्छी तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। और इस बीच में आप पहले आप इतना रोते थे, अभी आप स्माइल आप हंस रहे हो। ये 2 साल तक मैं खूब रोई हूँ। 2 साल तक मैं बिस्तर पे थी, कहीं आना जाना नहीं था। मैं बाथरूम नहीं जा सकती थी, मेरा सब चीज़ बेड पे ही होता था। अभी मैं बाथरूम भी जा सकती हूँ, नहा भी सकती हूँ, अपने आप से खाना भी खा सकती हूँ। मैं कहीं आना जाना चाहूँ तो उतर जा भी सकती हूँ। Wow, you know, this is amazing that she is today able to manage all her normal daily activities on her own. And before she had to depend on so many people, nursing staff, you know, family, relatives, you know, everybody. And now she's able to do everything on her own. This is fantastic. Mrs. Kusum Jhanjhanwala, thank you very much। आपका ये टेस्टिमोनियल, आपका ये आपने जो कहा, इससे काफ़ी सारे लोगों को आशा मिलेगी। मैं इसीलिए मैं आपका थोड़ा रिकॉर्डिंग किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो 2-4 बातें आपने बताया अपने बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। इससे आपको भी खूब अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।